Hello, bhai. Welcome to my channel. Today topic: source of Indian Constitution. Indian Constitution borrowed from many countries like USA, UK, Russia, Japan, South Africa, Germany, Ireland, and so on. बेसिकली मेजर 10 कंट्री से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है. सो टुडे टॉपिक various source of Indian constitution. So let's start. So various source of constitution of India. Source of Indian constitution. Source of Indian constitution. First, Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. Most important. Before independence, इंडिया ब्रिटिश का गुलामी करता था. सो ब्रिटिश वो रूल आना था भारत के आइन व्यवस्था के लिए. सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश आइन. इट इज ए ब्रिटिश आइन टू कंट्रोल इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. सो फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Most important act. So Government of India Act 1935. Government of Indian 1935. Indian Constitution पाया फेडरल स्ट्रक्चर. नंबर 1, फेडरल स्ट्रक्चर. नंबर 1, फेडरल स्कीम. जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं था, इंडिया डिवाइडेड था. फेडरल वन सिंपल मीनिंग, जनरल टर्म फेडरल मीनिंग डिवाइडेड. सो प्रिंसली स्टेट था, प्रोविंशियल स्टेट था ड्यूरिंग ब्रिटिश. सो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया फेडरल स्कीम. फेडरल मीनिंग इन वन वर्ड, पावर डिवाइडेड. नेक्स्ट, बोरो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नर. ऑफिस ऑफ गवर्नर. नंबर 2, ऑफिस ऑफ गवर्नर. ऑफिस ऑफ गवर्नर. भारतीय संविधान borrowed governor from government of India Act 1935. Governor basically appointed by president, and term of governor pleasure of president. Appointed by president and appointed by president term pleasure of president.
pleasure of president. Next, number 3, judiciary. Judiciary is also taken government of India. Judiciary. यहाँ से बड़ो किया फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बढ़ किया इमरजेंसी बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन. इमरजेंसी. नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 2, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोर्ड किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटिश जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म of government. Number 1, parliamentary form of government. Next, borrowed किया from British Constitution, rule of law. Rule of law. Rule of law. Next, legislative procedure. Legislative. हाँ কি গো ছবি তুললাম. लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप. इंडिया का अंदर आप सिर्फ इंडिया के नागरिक हो सकते, सिटीजन हो सकते हो. दूसरे देश का डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया पर. इज नॉट अलाउड. डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया. सो सिंगल सिटीजनशिप borrowed from British Constitution. Next, cabinet system. Cabinet system. Next, writ. Total 5 type of writs: habeas corpus, mandamus, quarantine, prohibition, surgery. So total 5 type of writs. Writs के बारे में आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा है.
B.R. Ambedkar कहा आर्टिकल 32 इज अ हार्ट एंड सोल। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर क्वेश्चन आया था, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। सो रीड्स टोटल 5 टाइप ऑफ रीड्स, हैबेस कॉर्पस, मैंडामास, क्वारंटाइन और प्रोविजन सर्जरी। नेक्स्ट पार्लियामेंटरी प्रिविलेज, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज, parliamentary privilege. Number 8. Next, bicameralism. Next, US, United States of America. Number 3. US preamble, we the people of India have solemnly. So preamble. Next, fundamental rights, article 12 to 35. Fundamental rights, fundamental rights, article 12 to 35. Article 12 to 35 of Indian Constitution tells about fundamental rights. Fundamental rights are taken from USA. So fundamental rights are taken from USA, United States of America. Fundamental rights. Next, independent of judiciary, independent of judiciary. Next, impeachment of president, impeachment of president. Next, president is a supreme commander of India. He or she is the head of Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force. So that's why president is the supreme commander of India. Next, removal of Supreme Court or High Court judge. Removal of High Court and Supreme Court judge. High Court and Supreme Court judge. USA बड़ो किया पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, Point to remember, Vice President is a chairman of Indian Rajya Sabha. So Vice President is a chairman of Rajya Sabha. Next, Irish. Next, number 4, Irish, Ireland. आयरलैंड से बड़ो किया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. बेसिकली आर्टिकल 36 to 51 तब DPSP बारे में कहा है. DPSP इज नॉट जस्टिसेबल, आप कोर्ट पर नहीं जा सकते हो. यहाँ पर प्रमोट किया सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशन और माइनॉरिटी वीकर सेक्शन, मेटरनिटी लीव, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड,
international peace and security, judiciary and executive separation. So Ireland DPSP आया. So Ireland से DPSP नहीं आया. Directive principle of state policy is taken from Ireland. Ireland is also born from Spanish constitution. So UPSC previous year question पर और one day exam पर आ सकता है. So Ireland कहाँ से डीपीएसपी बोरो किया? सो स्पेन से एंड इंडिया बोरो किया डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड. गुड जॉब. नेक्स्ट नंबर 5 कनाडा क्वासी फेडरल. नेक्स्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन. एडवाइजरी जुरिडिक्शन. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन. In India there are three type list. Number 1 state list, number 2 concurrent list and number 3 central list. So जो लिस्ट आया है वो आया है ऑस्ट्रेलिया से. तो ऑस्ट्रेलिया लिस्ट स्टेट सेंट्रल कॉन्करेंट. यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से इंडिया बोरो किया. सो ट्रेड एंड कॉमर्स बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ट्रेड एंड कॉमर्स borrowed from Australia. Next, joint sitting parliament. Next, India borrowed Germany. Germany. India borrowed from many countries. Germany constitution is also known Weimar constitution. Indian constitution borrowed emergency. भारतीय संविधान आर्टिकल 352, 356 एंड 360 इमरजेंसी के बारे में कहा है. आर्टिकल 352 दैट्स मीन नेशनल इमरजेंसी. नेक्स्ट आर्टिकल 56 स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल एंड 360 इज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो इमरजेंसी प्रोविजन borrowed from Germany. So emergency provision are borrowed from Germany. And during emergency suspension of fundamental rights कहाँ से लिया? Also from Germany. During emergency suspension of fundamental rights. Emergency provision article 352, 356 and 360 national emergency, state emergency and financial emergency are born from Germany. So Germany. Next Russia से USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक.
1991 के रशिया का पहला नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 जब रशिया कोलैप्स यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 15 कंट्री पर डिवाइडेड हो गया। सो यूएसएसआर से बोर्ड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट आर्टिकल 51। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A are borrowed from USSR. Next, India borrowed from France. Next, France. Liberty, equality and fraternity. जो फ्रेम बन गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आई थिंक 1789 पर जब फ्रेंच पर रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर जो मेजर स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो इंडिया बोरोड फ्रॉम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट, साउथ अमेरिका। इंडिया borrowed from South America. 19 South America Constitution Amendment Article 368. So Constitution Amendment Article 368. So Constitution Amendment Article 368. Another one, election of Rajya Sabha member. Election of Rajya Sabha member. So ভারতীয় সংবিধান borrowed from many countries. British USA, Germany, France, Japan, Russia, I forget. Russia. So India various source of constitution.